एक करो जाओ चाहे बोले हाँ I'm sure अच्छा तो there must be a way up. Good morning lovely people. मेरा नाम अभिषेक है and I welcome you guys to my YouTube channel Rasta Dastaan. This is my first vlog and I will try to keep it short and simple. So आज हम भानगढ़ फोर्ट जा रहे हैं which is about 250 kilometers away from Gurgaon. The time is about 7:45 a.m. in the morning. So I will see you guys on the road. We have reached Manesar toll gate, which is the first toll on Delhi-Ajmer highway or the NH48. So this part here will be a voiceover as I realized later that my GoPro mic was malfunctioning and it didn't record my voice at all. ठीक है, कोई बात नहीं. I hope you guys will enjoy the view. इसके बाद we were looking for a breakfast joint and roughly after 100 kilometers we stopped for breakfast. We stopped here for breakfast. It's the food street. It's a nice place. चलो अभी निकलते हैं यहाँ से. जयपुर यहाँ से almost 150 kilometers है. Hopefully we will reach there within 2 hours or something. So this was the place. I hope you guys are able to see it. It's nice, right? The interior is also very nice. So let's get back on the highway. The road is so empty today. It's nice. Okay, Jaipur is 132 kilometers. So Bhangarh will be around 140. We have to take a diversion from the next toll gate. So for those of you who don't know about Bhangarh, it's one of the haunted fort of India. And it has few stories behind it. Basically ये fort 17th century में बनाया गया था and it's really nice place to visit. Weekend trips के लिए बहुत अच्छी है. किसी को अगर एक दिन के लिए जाना है तो मस्त है. So this is the toll plaza. पर नाम तो नहीं लिखा है क्या है, कौन सा टोल प्लाज़ा है, पर इसके थोड़ा आगे ही जाके मुझे एक लेफ़्ट लेना पड़ेगा. अरे बाइक्स के लिए कहाँ से जाऊँ, आगे से निकल जाते हैं. Testing 1 2 3. It started recording. Okay. So we will be taking NH148, right? We will be taking NH148 for Bhangarh. So अगर आप सीधा चले जाओगे तो it will be जयपुर, और अगर लेफ्ट लोगे तो you can go to Bhangarh and there is a भारत पेट्रोलियम which you can use as a landmark. Google मैप देख के आओगे तो आपके लिए easy है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. चलिए चलते हैं. The weather is so nice today. It's a single lane road but the roads are good. उतना प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन व्यू awesome है यार. शोजा ना. So we are 47 kilometers away from Bhangarh Fort and मैप में तो गूगल तो 51 minutes बता रहे हैं, पता नहीं
कितना टाइम लगेगा. होपफुली आगे ट्रैफिक ना मिले. ट्रैफिक नहीं मिलने से तो वी शुड रीच विद इन 30 मिनट्स और समथिंग लाइक दैट. आगे के रीच्ड भानगढ़ फोर्ट. लेट मी पार्क द बाइक. उसके बाद देख चलते हैं अंदर और दिखाते हैं सब. Which one? Yeah, হ্যাঁ ওইখানে ট্রেক করেও যাওয়া যায় বলে. হ্যাঁ I'm sure আছে তো there must be a way up. So it's 25 rupees per video. It's not that Per camera. Per camera. सो फाइनली भानगढ़ फोर्ट घूमने के बाद हम गुड़गांव के लिए वापस 3 बजे वहाँ से निकले. जब हम वापस आ रहे थे रास्ते में अचानक से एक हिरन मेरे बाइक के सामने आ गई, जिसका वीडियो अभी आप देख रहे हो. अनफॉर्चुनेटली मेरा माइक उस टाइम काम नहीं कर रहा था, सो कोई रिएक्शंस भी रिकॉर्ड नहीं हुआ. इट्स रियली सैड बट बैड लक. So we have stopped in this hotel Highway Prince. We need to have something, then we will be back on the road. We reached home at about 8:45 PM. रास्ते में इतना ट्रक्स था जिसके वजह से मैं लेट हो गया, पर जो भी हो it was an amazing ride and a great destination for one day short trip. Hit the like button if you guys enjoyed the vlog and do subscribe to my YouTube channel. I will see you guys in the next one.